everyone. We're going to continue with the next chapter of Hindu Marriage Act today. In the last class, we have discussed about some provisions of the divorce, and we have also discussed uh, courts to which in which court the petition shall be presented, and we have also discussed about the bigamy. Under Section 17 of the Hindu Marriage Act, we are discussing about the bigamy. Bigamy means when a person is marrying more than one person, more than one wife, then that is called bigamy. Okay. And under the concept of bigamy, we have understood the marriage, when the marriage is happening by a one man with more than two women, like more than one woman, like our Hindu culture, Hindu marriage act, it always represents the one marriage itself. Like एक ही बीवी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा हिंदू संस्कृति एंड हिंदू परंपरा. ओके, बट व्हेन देयर इज द सिचुएशन लाइक ए पर्सन इज मैरिंग टू वाइफ्स टुगेदर, दो लड़कियों के साथ एक लड़का एक साथ शादी कर रहा है, या फिर दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि उसी का पहले से एक पत्नी है, उसके बाद भी वो बंदा दूसरी शादी कर रहा है. सो इन ऑल दीज टू सिचुएशंस the person is accused of bigamy. And bigamy का punishment क्या होता है? As the punishment of the bigamy, the person is jailed the imprisonment of more than 7 years, and which is explained under section 494 and 495 of the Indian Penal Code. Section 494 and 495 of the Indian Penal Code is being now presented as the Bharatiya Nyaya Sanhita section 82 clause 1 and clause 2 के हिसाब से. Okay, so section 82 clause 1 and clause 2, it explains about the bigamy under the भारतीय न्याय संहिता, and उसके punishment का terms and conditions के हिसाब से अगर एक इंसान एक से ज्यादा इंसान से शादी करता है, then that person is liable for the punishment of more than the imprisonment which might extend more than 1 year. Okay, sorry, more than 7 years, 7 years or more. So this is what we have discussed in the last class. Okay, and under section 18 we have discussed the punishment for the contravention of certain other conditions of the Hindu marriage. Okay, we are talking about the contravention of the Hindu marriage. Okay, so you might ask me like, what do you mean by the contravention? Contravention means if there is any kind of mismanagement, that means अगर कोई चीज अच्छी तरह से होना हो and that is unable to be performed, then that is called the contravention. Okay, and section 18 speaks about the punishment for the contravention of certain other conditions of the Hindu marriage. Okay, so आपका section 5 of the Hindu Marriage Act, it explains about the terms and conditions of the marriage. Okay, so according to section 5, we have discussed that there are certain terms and conditions of the marriage, and those terms and conditions must need to be fulfilled. Okay, so अगर those terms and conditions is being contravening, is being not matched, or those are terms and conditions is being violated, then what happens over there? Then in those conditions, there is the punishment of the imprisonment as well as the fine. So what is the exact terms and conditions of the imprisonment and fine? Let's understand it in a detail. Okay, so पहले अंडर सेक्शन 18 क्लॉज ए के अंडर हमने जो पढ़ा था, अगर सेक्शन 5 क्लॉज 3 में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किया गया है उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है, then the punishment is the rigorous imprisonment which may extend to 2 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees or both. Okay, so that means section 5 clause 3, section 5 clause 3, it exactly defines about the marriage below a specific age. Okay, that means we have discussed when in a marriage the age of the boy is 21 years and age of the girl is 18 years, that is called a valid marriage. Okay, but when the age of the
boy is below 21 years and the age of the girl is below 18 years, that is called as an invalid marriage. उस शादी को relevant शादी नहीं माना जाएगा. This is the most important thing we have discussed. Okay. So, under if anything is contravening the clause 3 of the section 5, that means the age of the boy is below 21 years and the age of the girl is below 18 years. And if the parents of the boys and girls, they are making the marriage happen forcefully, then in those cases, the imprisonment, the punishment, that might extend to 2 years of the imprisonment with a fine that might extend to the 1 lakh of the rupees. वहां पे जो imprisonment होगा वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड उसी का जो फाइन का अमाउंट होगा दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख ऑफ द रुपीज और बोथ. ओके. तो ये हो गया आपका क्लॉज 1. क्लॉज ए. क्लॉज बी क्या एक्सप्लेन करता है? क्लॉज अकॉर्डिंग टू द क्लॉज बी इट इज एक्सप्लेन दैट व्हेन इट इज contravening the conditions specified in clause 4 and clause 5 of section 5. Clause 4 and clause 5, if a marriage is happening between the brother and sister, mother and son, relatives, the person from the blood relation. So in that specific case, when the marriage is happening in between the own blood relations, in that specific case, that marriage is called as an invalid marriage. Okay. उसको valid हिंदू मैरिज नहीं माना जाएगा. पहला चीज है. And that kind of marriage will be called as the voidable marriage as per the nature. And अगर ऐसी शादी जबरदस्ती या फिर with the force, with the coercion, undue influence किया जाता है, then what is the punishment for that? The punishment might extend to 1 month and the fine amount that might extend to 1000 rupees or both. Okay. उसका जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपका हो जाता है 1 महीना एंड उसी का जो मतलब फाइन का अमाउंट होता है दैट माइट एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और मोर. ओके. तो अगर आप अपना एज से पहले अपने बच्चे का शादी करवा देते हैं, उनको जबरदस्ती पढ़ाई ना करवा के ससुराल भेज देते हैं, देन आपको वो शादी को तो भैड माना जाएगा, पहला चीज. एंड उसी के साथ साथ द इम्प्रिजनमेंट विल बी 2 years along with the amount of fine that might extend to 1 lakh of the rupees. And at the second condition हमने ये चीज समझा कि अगर आपने अपने रिलेटिव में, ब्लड रिलेटिव में शादी करते हो, द मैरिज व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय द ब्लड रिलेशंस, अपने रिश्तेदारी में, अपने ब्लड रिलेशंस में शादी करना इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. But even after knowing that if you are marrying in those blood relations, then the imprisonment might extend to 1 month and the fine amount that might extend to 1000 rupees or both. Okay. Then the next point, court to which the petition shall be presented. Okay. So ये आपका बताता है section 19 के अंदर that what are the courts in which the petition shall be presented. In which location or which jurisdiction. That also we have discussed in the last class. I have explained you that what is the exact jurisdiction of the court. Okay. पहले मैंने आपको समझाया था कि where the marriage was solemnized, जहाँ पे दोनों का शादी solemnize हुआ था, जहाँ पे उन दोनों साथ रह रहे थे, last resided together. Okay. दूसरा condition we have understood, the respondent at the time of the present of the petition resides. That means petition present होने के time where the respondent was residing at the last time. Third, where the parties to the marriage last resided together. शादी का जो parties है, like the petitioner and the respondent, both of the parties where they resided together before the ending of the marriage. That means उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट आने से पहले उन दोनों जहां पे साथ साथ लास्ट टाइम रह रहे थे उस जगह पे भी पिटिशन फाइल किया जा सकता है फॉर द डिवोर्स. ओके.
Next point, in case of the wife is the petitioner where she is residing on the date of the presentation of the petition. Okay, तो ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि when the wife is the petitioner, जब wife petitioner बन जाती है, then at the date of the presentation of the petition, जिस डेट पे आपका पिटिशन प्रेजेंट हो रहा है, उसी वक्त वो जहां पे रह रही थी उस जगह पे भी आपका पिटिशन फाइल हो सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर in case where the respondent is at that time residing outside the territories to which the act extends. What does it mean? It means the petitioner is residing at the time of the presentation of the petitioner. When the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, petition जिस time पे present किया जा रहा है, then at that time when the respondent is residing outside the territories, अगर respondent जो है वो टेरिटोरी का आउटसाइड में रिसाइड कर रहा है एंड वो जिस टेरिटोरी पे रिसाइड कर रहा है इन दैट टेरिटोरी इंडियन लॉ एंड ऑर्डर इज एप्लीकेबल, Hindu Marriage Act has to extend on that location. Hindu Marriage Act has the enforceability on that location. Then in that case also the marriage can be solemnized, the case can be continued at that specific location itself. Okay, ये हो गया आपका सेक्शन 19. सेक्शन 20 में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशंस ऑफ द पिटिशन, जो कि हम लोगों ने ये पढ़े थे कि who are the legal representatives of the parties. Okay, for example, you and me are the two legal representatives of the parties. Like I am the wife, मेरे husband ने मुझे छोड़ा है. Okay, so when there is the filing of the petition of the divorce or the judicial separation or the restitution of the conjugal rights, whatever it is, whatever the mode of the petition, that doesn't matter. So when there is the any kind of the content is present there for the verification of the petition, then every petition presented under this act shall state distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to be relief is founded, and except the petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and other parties of the marriage. Okay, so when there is the terms and conditions of the petition, the contents are presented in front of the court, then that should be make sure that there is no collusion between the parties regarding the contents of the petition. Okay, regarding the fact of the petition. जैसे कि for example, it usually happens that the parties are very variable with their opinions. Okay, जहाँ पे हस्बैंड बोलता है कि नहीं, हमारा शादी को लेके हम दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है ना, वो फ्रॉम लास्ट 6 साल से चल रहा है. वाइफ बोल रहे है कि नहीं, वो तो लास्ट 3 साल से चल रहा है. सो हियर देयर इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट. यहाँ पे पिटिशनर और रेस्पोंडेंट हस्बैंड एंड वाइफ का जो ओपिनियन है उसी में वो कंट्राडिक्ट कर रहा है. The opinion of the husband and wife are not matching together. ये एक बात बोल रही है, वो भी एक दूसरा बात बोल रहा है ना. So when the opinion of the parties are not colliding with each other, when ये opinion एक दूसरे से differ कर रहा है, then this will be a strong question of fact in front of the court. कि आप दोनों का opinion ही तो पहले से गलत आ रहा है. Then how we are going to proceed with the proceedings? आपको पहले ये चीज का कंफर्मेशन करना होगा कि आप जो फैक्ट दोनों कोर्ट के सामने रख रहे हो ना, दैट शुड बी वन एंड फाइनल. ओके, अगर पिटिशन पे ये लिखा गया है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को लास्ट 5 साल से छोड़ के उसी से दूर रह रहा है, उसी के साथ नहीं रह रहा है, देन हस्बैंड आके बोल रहा है कि नहीं, मैं तो अपनी बीवी के साथ तो लास्ट 1 साल से ही नहीं रह रहा हूँ, उससे पहले तो मैं रह रहा था उसके साथ. तो यहाँ पे देयर विल बी द वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट.
कि एक्चुअली सच बोल रहा है तो कौन सा पार्टी सच बोल रहा है, द हस्बैंड इज राइट और द वाइफ इज राइट, सच किसने बोल रहा है, पहले इस चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जब पता चलेगा कि नहीं, मान लो इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वाइफ सच बोल रही थी कि हस्बैंड उसी के साथ लास्ट 5 साल से नहीं रह रहे हैं, सो एंड हियर आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द फैक्ट, after the finalization of the concept only the process will be go ahead. ओके तो यहाँ पे पहले इस चीज का फाइनल होगा कि सच कौन बोल रहा है, पति बोल रहा है या पत्नी बोल रहा है। जो सच बोल रहा है आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द डिसीजन देन द प्रोसीडिंग्स विल बी कैरी फॉरवर्डेड। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द स्टेटमेंट्स contained in every petition under this act shall be verified by the petitioner and some other competent person in the manner required by law for the verification of claims and may at the hearing be referred as the evidence. So what does it mean? It means the statement contains in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in manner required by law. Okay, मान लो the petitioner is not much highly qualified, उसको ना इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, so उसी ने अपने वकील के थ्रू ना ड्राफ्टिंग करवा दिया है ना। जब उसने अपने वकील के थ्रू ड्राफ्टिंग करवा ही दिया है तो उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता ना, सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू वेरीफाई द पिटिशन कि पिटिशन पे जो जो चीजें सही लिखा गया है वो सही है क्या गलत है, उस चीज को वेरीफाई करने का कैपेबिलिटी क्या उसके पास है? आंसर इज नो, बिकॉज दैट पर्सन इज टोटली एन इनोसेंट पर्सन, उसको कोई नॉलेज हो। what we are discussing, okay, so when the petitioner is the person, like that person is totally unaware about the facts, unaware about the terms and conditions, को legal knowledge है नहीं, and that person has drafted the petition through his through the legal representatives itself, so that person has all the rights to verify the petition itself, उसको पूरा right है पिटिशन वेरीफाई करने का कि जो जो चीज पिटिशन पे मेंशन हुआ है वो कितना दूर तक सही है कितना दूर तक गलत है। इज द फैक्ट्स मेंशन्ड ओवर द पिटिशन इज राइट एट ऑल, जो जो फैक्ट्स पिटिशन पे मेंशन हुआ है क्या वो सही है? ओके एंड अगर the petitioner who is the illiterate person is unable to verify the terms and conditions by himself, any other competent person on behalf of the petitioner is responsible and is liable to check out all the facts itself. Okay, अगर पिटिशनर खुद नहीं कर पा रहा है ना तो उसके तरफ से अगर कोई दूसरा इंसान है, दूसरा पर्सन है, who is the legal representative itself, उसके पास पूरा राइट है टू चेक आउट ऑल द फैक्ट्स, ऑल द टर्म्स, ऑल द कंडीशंस ऑफ द पिटिशन मेंशन्ड, दैट इज इट द वैलिड फैक्ट और नॉट। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, देन आते हैं सेक्शन 21A पे, जहां पे आपको ये बोलता है पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टेन केसेस। ओके, इट एग्जैक्टली स्पीक्स अबाउट द power to transfer petitions in certain cases. That means in certain specific cases, it speaks about the transfer of powers. Okay, so how does it work? The simple concept is when I am the party, I am the petitioner, I have presented the petition at a specific location. As a respondent, you have to appear in my location itself. अगर मेरा घर, मेरा लोकेशन भुवनेश्वर पे है, उड़ीसा का भुवनेश्वर पे मैं रह रही हूँ, एंड भुवनेश्वर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मैंने एक डिवोर्स का पिटिशन फाइल किया हूँ, देन इफ यू आर द पर्सन हु इज स्टेइंग एट द दिल्ली इटसेल्फ, इफ यू आर माय हस्बैंड एंड आप दिल्ली लोकेशन पे रह रहे हो, इट माइट बी द पिटिशन फॉर द डिवोर्स, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है। इफ आई हैव फाइल्ड ए पिटिशन at the locality of Bhubaneswar, you have to come to my location for the performance of the presentation. As a respondent, आपको मेरे locality पे appear करना होगा, and that is your duty and responsibility as the respondent. But मान लो you are the person
who is incapable to come and go to the location of भुवनेश्वर। आपके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है जो कि आप कोर्ट को शो कर सकते हो कि नहीं, मैं तो रेगुलर बेसिस पे भुवनेश्वर आना जाना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी, है ना। सो व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस, this is the discretion of the party, this is the discretion of the court itself according to the grounds of the party। पार्टी ने जो जो ग्राउंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है ना, अगर उस ग्राउंड्स को देख के कोर्ट को ये फील होता है कि नो दिस इज द सफिशिएंट रीजन फॉर द पर्सन कि हाँ वो एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इस लोकेशन को, देन दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट to decide whether the petition should be forwarded to the another court or not. Okay, this is the discretion of the court itself to decide whether the petition should be forwarded to the another court or not. This is exactly explained under your section 21A, which explains about the power to transfer petitions in certain cases, which exactly speaks about the power to transfer the petition in specific circumstances. Okay, so what does it mean? Where a petition under this act has been presented to a district court having jurisdiction by the party to a marriage, praying for a decree of judicial separation under section 10 or for a decree of divorce under section 13, and another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage, praying for the decree for the judicial separation under section 10 or for the decree of the divorce under section 13 or any other ground, whether in the same district court or in the different district court, in the same state or different state. Okay, तो यहाँ पे क्लॉज 1 आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ओके, तो जैसे कि वी आर द पार्टीज, ओके, मान लो वी आर द हस्बैंड एंड वाइफ, हम दोनों ने शादी किया, तो यहाँ पे इफ वी हैव डिसाइडेड टू स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अगर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं हम लोगों को साथ नहीं रहना है, हम एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, वी वांट टू स्टे सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर, सो यहाँ पे डिवोर्स का हो गया या आपका जुडिशियल सेपरेशन का हो गया, उसका जो पिटिशन फाइल होगा वो कहाँ पे होगा, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही होगा। ओके, मान लो यू आर स्टेइंग एट दिल्ली, आई एम स्टेइंग एट उड़ीसा, तो मैं अपना जो भी पिटिशन है वो कहाँ पे फाइल करूंगी, मेरा लोकल एरिया पे करूंगी, मतलब मेरा लोकल एरिया, मान लो माई लोकल एरिया इज एट द भुवनेश्वर उड़ीसा, तो भुवनेश्वर का जो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे जाके आई विल फाइल दैट पिटिशन, हाँ कि नहीं, मैं वहां पे जाके बोलूंगी कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरे को मेरे पार्टनर से डिवोर्स चाहिए या जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। Here I am explaining the court to the situation that I don't want to stay with my partner. समझ में आ गया है ना? So when it is about the another party, मान लो you are my husband, आप कहाँ पे रह रहे हो, दिल्ली पे, आप दिल्ली का कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे रह रहे हो, so when you are going to file a petition for the divorce or the judicial separation that आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तो आप कहाँ पे जाके करोगे, आपका लोकेलिटी पे करोगे। ओके, आपका जो भी आसपास का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा आप वहां पे जाओगे और अपना डिक्री फाइल करोगे, डिक्री फॉर द डिवोर्स फाइल करोगे, है ना। तो एग्जैक्टली सेक्शन 21A इस बात का जो पहला क्लॉज है इस बात को बोलता है कि अगर दोनों पार्टी एक ही कोर्ट पे कर रहे हैं या फिर अलग अलग कोर्ट पे कर रहे हैं, मान लो यू आर ऑल्सो फ्रॉम भुवनेश्वर, आप भी भुवनेश्वर से ही बिलोंग करते हो, है ना, तो अगर आप भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो देन भुवनेश्वर का जो एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ऐसा नहीं है कि भुवनेश्वर पे 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसा तो नहीं है, भुवनेश्वर पे एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो अगर भुवनेश्वर का जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मैं अपना पिटिशन फाइल कर रही हूँ फॉर द डिक्री ऑफ द डिवोर्स और द जुडिशियल सेपरेशन, आपको अगर मेरे अगेंस्ट भी अपन द सेम थिंग अपन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन और द डिवोर्स डिक्री फाइल करनी है, तो आप कहाँ पे करोगे, आप भी उसी सेम कोर्ट पे ही करोगे। सेम कोर्ट मतलब यू विल फाइल द पिटिशन
एग्जैक्टली एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द भुवनेश्वर, है कि नहीं? तो अगर आप भुवनेश्वर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे करोगे और मैं भी भुवनेश्वर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे फाइल किया हूँ, दिस इज जस्ट द डिफरेंस कि यू आर द पार्ट, यू हैव फाइल्ड ए पिटिशन अगेंस्ट मी एंड आई हैव फाइल्ड ए पिटिशन अगेंस्ट यू। मैंने जो डिक्री फाइल किया है फॉर द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, मान लो मैंने यहाँ पे कोर्ट को जाके बोला है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक साथ रहना नहीं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे सेपरेट फ्रॉम माई हस्बैंड, ओके, and I have filed the decree of the judicial separation in the court of law. You are my husband and I have filed a petition against you that you are doing cruelty to me, you are mentally harassing me. आपको लेकर बहुत सारी दिक्कत मेरे को है, जिसको लेकर मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, and I have filed a petition against you in the भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and you are also the resident of the भुवनेश्वर. आपको भी मेरे अगेंस्ट पिटिशन फाइल करनी है that my wife is also having the extramarital affairs, she is doing the act of the cruelty to me, she is doing the mental cruelty, वो मुझे मारती पीटती है, so there are sufficient grounds of yours to file a petition against me. तो आप कहाँ पे करोगे? आप भी भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे करोगे। तो हम दोनों ने ना against each other we will file the petition against each other, but that is at the same court. तो ये हो गया when the petition is filed at the same court itself, okay? And in the second circumstances, what we are discussing, when there is the petition filed by the parties against each other in the in different courts, just like I told you, I am the resident of the Bhubaneswar and you are the resident of Delhi. We are not residing with each other together. मैं भुवनेश्वर पे रह रही हूँ, आप दिल्ली पे रह रहे हो. So you are filing the petition against me at the court of Delhi itself, and I am filing a petition against you at the भुवनेश्वर court itself. तो यहाँ पे हम एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी डिक्री फाइल कर रहे हैं, that is at the different courts itself, है ना? Clear? So in that case, what will happen? It is explained under clause 2 of the Hindu Marriage Act, section 21A, clause 2. क्या बोलता है? In a case of subsection 1 applies, if the petitions are presented to the same district court, both the petitions shall be tried and heard together by the district court. अगर दोनों का पिटिशन सेम कोर्ट में फाइल हुआ है, then that will be heard and tried together, okay? अगर हम दोनों ने एक ही कोर्ट पे अपना अपना पिटिशन फाइल किए हुए हैं, then the court will decide the decrees together, then the court will proceed for the decrees together. कोर्ट क्या करेगा? वो जो डिक्री है ना, एक साथ दोनों का डिक्री को साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेगा. ये हो गया आपका पहला कंडीशन. When the petitions are presented in the same district court, both the petitions shall be tried and heard together by the district court. ये हो गया आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज 2 सब क्लॉज ए. सब क्लॉज की बी क्या बोलता है? If the petitions are presented to different district courts, the petitions presented later shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented, and both the petitions shall be heard and disposed together by the district court in which the earlier petition was presented. So what does it specifically means? It means if I have filed the petition at the district court of Bhubaneswar and you have filed the petition at the district court of Delhi, but the petition is against each other, एक दूसरे के अगेंस्ट पिटिशन फाइल किया है, and it is at the same court, at the same jurisdiction, at the same sense, at the same concept itself. आपने मेरे अगेंस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पिटिशन फाइल किया है and you have applied for the decree of the judicial separation. मैंने भुवनेश्वर कोर्ट पे आपके अगेंस्ट डिक्री ऑफ द डिवोर्स का पिटिशन फाइल किया है एंड इट इज प्रेजेंटेड एट द कोर्ट ऑफ भुवनेश्वर. तो वहां पे क्या होगा? व्हेन देयर इज द सर्कमस्टेंसेस कि दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट
पिटिशन फाइल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, देन जहां पे आपका पहला पिटिशन फाइल हुआ होगा, दैट विल बी योर प्राइमरी लोकेशन इटसेल्फ। अगर पहले मैं भुवनेश्वर कोर्ट पे आपके अगेंस्ट पिटिशन फाइल किया हूं, देन भुवनेश्वर कोर्ट विल बी माय प्रायोरिटी। देन फर्स्ट, अगर मान लो टुडे इज द 3rd of October, मैंने 3rd अक्टूबर में भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अपना पिटिशन फाइल कर दिया, और आपने 5th अक्टूबर पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना पिटिशन फाइल करते हैं, तो पिटिशन किसका पहले एंटरटेन होगा? पिटिशन पहले मेरा एंटरटेन होगा, बिकॉज आई हैव फाइल्ड द पिटिशन फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा, बिकॉज पहले 3 तारीख को मैंने पिटिशन फाइल किया था, उसके बाद 5 तारीख को आपने पिटिशन फाइल किया। सो हियर अगर देखा जाएगा तो पहला लायबिलिटी जो है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका था? मेरा था। सो एज द रेस्पोंडेंट यू हैव टू मूव टू माई लोकेशन। एंड यहाँ पे अगर दोनों का लोकेशन सेम होता है या दोनों का लोकेशन अलग अलग होता है, वो मैटर नहीं करता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कैरी फॉरवर्ड द पिटिशंस टुगेदर at a specified date and with a specified circumstances itself. Okay. So this is about section 21A of the Hindu Marriage Act. Okay. Section 21B speaks about the trial and disposal of the petitions under this act. Okay. So you may ask me that what do you mean by the trial and disposal of the petitions? 21B will be discussing in the next class, guys. This is all for today. We can wrap up the class over here. And next class, we can just teach 10 minutes more and I'll be clarifying you all your doubts. So that is all. Thank you.